Yeah, hi Akarma, this is Devyani. Hi, Um, Divyan. yeah, so I have given a lot of time to analyze myself, um, and I have figured out that whatever the obstacles are there in the law of attraction, um, I often believe that professionally I'm doing great. Everything is going great. I'm in a leadership position. I have a hell lot of self-confidence. But when it comes to personal relationships or personal life, I often remember some of the incidences in my childhood bullying. Now, I've also been very vigilant that I will not let the bullying happen to any kids in my family or anyone. And despite knowing that childhood bullying is wrong, there is a lack of confidence regarding the bullying that happened in the childhood, which is why I think the affirmation is failing. Now, all this is my observation and my conclusion. So, I just wanted to know if it is true and if this kind of thing works, and if it works, how can I overcome it despite knowing that whatever bullying I had as a childhood, it was wrong, and how can I do the correct way of affirmation? I didn't understand what you asking. Like, what is it that you said? Is it true? Which like, I probably missed that. So you asked, Okay. is this true? What did you ask? What is true? Okay. I was lucky. I had experienced a childhood bullying so much, for being like a tomboy or something. But Hmm. now professionally, I never had any problem. I have a whole lot of self-confidence. I am a leader of a team. I'm a leader of a BU, business unit, and there is no obstacle. But when it comes to personal relationships, I often remember what the people like what my classmates at that time said. Now, is this abnormal, like, or is this true that this is an obstacle, or if this is an obstacle, how should I overcome it, Bullying, like? bullying is a traumatic experience. So if you still remember all that, I think that is normal only if that was not addressed, if you never received any counseling around it, if you never did anything about it. So it is a traumatic experience for any child. So you would remember it and it So would how trigger can you I? time to time. Something similar and all that will trigger you. So it doesn't go away anywhere just because you've grown up and childhood is gone now. It doesn't go away anywhere. It actually grows more with you. So how Now, can I one thing I would overcome that, like to like? add for you, Devyani, the Okay. more you use law of attraction to heal this thing, the more you're going to create trauma inside yourself. Because, there's a part, that's what I was talking like for literally half an hour. And that's what I was trying to tell everybody that whenever it comes to traumas and wounds and all of these incidences that we have gone through, until and unless we bring awareness to those things, no matter how many affirmations, how many tools, how many techniques, what all we continue to keep using, it will not work. And in fact, using all of those things is going to create more trauma inside you, because there is one part of you which is screaming and telling you that, see, I'm feeling this pain and please look at me. Please assure me. Please love me. Please tell me that I'm safe. Please do something with me. And you're telling, oh, you're not relevant. I'm not supposed to look at you. I'm going to do my affirmations and I'm going to say, I'm this and this and this. Hmm? So that's actually the subconscious thing actually happening inside when we start using law of attraction in the wrong places. When it comes to trauma and hurt and wounds, and that's what I was telling. The first point was that it doesn't take a lifelong thing to work on our wounds, and it's the toughest thing to do. Trust me, there is no tougher job than being able to look at our own wounds and our own trauma. So it's not an easy process. It's a very intense process. You have to look at all your emotions. You have to look at all your pain. You have to allow it to come up on the surface. You have to allow it to pass on. But this literally is um, a foundational, fundamental
like creating, जब हम घर बनाते हैं तो हम नींव डालते हैं. So this is literally like creating a foundation for yourself so that you can, go forward and then actually use law of attraction and all of these tools and techniques that you have properly. तो जब तक इस पे healing नहीं होगी, specifically you do not deal with this particular thing, using all of these things will actually not be helpful. And I guess if you're doing this from some time, you would have observed, that there is a clash that happens. There is, for some moment, we can feel that, oh, now I'm feeling so happy and light and good and everything. But the moment something like that appears, we are again triggered and we fall back in the downward spiral. That is what shows कि काम नहीं हुआ है. That is what shows कि हम ये feel, वो उस केस में जब हम ये सब चीजें यूज करते हैं तो हम इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए या हमें कुछ एक्सपीरियंस करना है. वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा फोकस है कि हमें अभी जो है वो नहीं चाहिए. And again, the more you focus on what you do not want, that is what law of attraction gives you. So it's going to offer you more people to trigger you, because it's the law works with contrast and it keeps telling you again and again, look at me, look here, see, this is where you need to work upon. That's how literally law of attraction works. So what I'm saying right now is a pretty advanced level stuff. Nobody actually, I have not seen most teachers talk about this thing, but that's how law of attraction actually works, because ये use करने का. I just what you complete, then I'll say something. हाँ, ये use करने का मतलब evolving and raising your vibrational level does not mean कि अब ना ये चीज होनी नहीं चाहिए. अब मैंने affirmations कर लिया तो ये चीज गायब हो जानी चाहिए. No, it's like the beauty of this process is कि बार बार वो चीजें आपके सामने आती रहेंगी जब तक आप उन पे काम नहीं कर लेते, जब तक आप उन चीजों को देख नहीं लेते. That's the whole point why triggers and contrast and different kind of contrast continue to appear in our life, right? So that we can bring awareness to those things. Yeah, that's all. Akarma, you can go ahead. हाँ, so जैसे इसको देखने के लिए the simplest way I can ask you all to look at this. तो पहले एक स्टोरी है, जो स्टोरी मैंने कई बार यूज की है पहले. People who regularly connected with us, they probably remember this story, but there are a lot of new people as well. So this is a story where there is एक राजा होता है जिसको ना बहुत हमेशा गुस्सा आता रहता है, हमेशा very impatient and angry and all that. And then he comes to know कि एक monk है जो बहुत काम है और लोग उसकी calmness और उसके groundedness की बहुत बातें करते. तो he asks that monk, एक बार he visits that monk and he asks him कि please teach me. मेरे को बहुत गुस्सा आता है and I'm always like this. मेरे को अपने एंगर को मैनेज करने के लिए, इसको करने के लिए मेरे को कुछ सिखाओ. तो I know कि you are a very calm and grounded person and all that. So teach me how I can do this. So the monk says to him, ठीक है, okay, I'll come to your place tomorrow and then I'll teach you. तो बहुत खुश होता है राजा उससे. He prepares a very lavish meal feast for the monk and all that. तो monk आता है अगले दिन और वो उनके पास एक बाउल रहता है ना जिसमें वो भिक्षा मांगते हैं, तो वो लेके आता है अपने साथ. तो जब वो खाना खाने बैठते हैं तो वो अपना बाउल आगे रखता है, तो उस बाउल में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गोबर सब ऐसे पड़ा होता है. तो राजा उसमें जैसे ही खाना डालने लगता है तो देखता है कि इसमें तो ये सब पड़ा है. तो then he says कि ये तो गंदा है. तो वो then the monk asks, so क्या करना चाहिए? He says आप इसको धो देते हैं, तो मैं खाना डालूंगा तो सारा खाना गंदा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. तो let's wash this. तो then he asks someone to go and wash this.
एंड देन उसको वॉश करने के बाद देन ही पुट्स द फूड, दे हैव मील एंड ऑल दैट, और फिर वो जाने लगता है मंक। तो राजा उससे पूछता है कि अरे आप मेरे को सिखाने के लिए आए थे कि ये सब कैसे करना है, तो आपने तो कुछ बताया नहीं। तो देन ही सेड नो, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, और वो चला जाता है। So now what this story signifies? What this story signifies is कि हम पॉजिटिव भरने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भरा पड़ा है हमने वो क्रैप अभी तक क्लियर किया नहीं। तो हम हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से देख सकते हैं कि इमेजिन अ ग्राफ, इमेजिन अ लाइन, एंड यू आर इन द नेगेटिव एंड ऑफ द ग्राफ, यू वांट टू गो टू द पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए पहले जीरो से होके जाना पड़ेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव का सीधा जंप नहीं लेना है। तो जब हम वो करने लगते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि दिस और दैट। इट इज नॉट दिस और दैट, इट्स बोथ। बट द फर्स्ट थिंग इज, नेगेटिव से जीरो पे आने के लिए पहले अपने बर्तन को क्लीन तो करो। उसमें मिठाई भरने से पहले उसको क्लीन तो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स विल कम व्हेन यू कम टू द जीरोथ पॉइंट। Once you come to the zeroth point and you want to go to the positive, then law of attraction can work. But if you are on the zeroth point and you on the in the negative scale and you are trying to jump to the positive, वो नहीं होगा। वो बर्तन में गोबर कंकड़ पत्थर सब पड़ा है और उसी में हम पॉजिटिव भी डालने की कोशिश करें, वो सब मिक्स हो जाएगा, वो नहीं होता है वैसा। तो दैट इज द लेसन दैट दिस मंक गेव हिम, कि आपको हमने उसके ऊपर काम करना है, गुस्से पे और इस सब पे काम करना है। तो आप मेरे को ये बताओ कि मुझे कुछ दे दो, लेकिन खाली करना है, उस खाली करने के ऊपर ध्यान नहीं, लेने के ऊपर ध्यान है। और कैसे ले, और मैं क्या डाल लूँ इसमें, लेकिन डाल किस में रहे हैं वो ध्यान में नहीं दे रहे हैं हम। जिस चीज में डाल रहे हैं वो चीज ऑलरेडी गंदी है। इज दिस मेकिंग सेंस दिव्यन? Yeah, Akarma, thank you, and Anamika, thank you. But if I may add something to it, that I know कि I have to reach zero. I know I have to pass some numbers to reach zero, and I know that zero is the destination and should be the destination. And despite traveling towards zero, I'm having the baggage of negativity. Is this a part of healing? or or am I doing something wrong? राइट। सो आपने मेरे को ये बोला कि लेट्स से कि आपके आप ये बोल रहे हो कि आपके दांत में दर्द है और आप बहुत दिन से डिस्प्रिन खा रहे हो, और बहुत दिन से डिस्प्रिन खा रहे हो और दांत का दर्द जा नहीं रहा है। Hmm. तो इससे क्या समझ में आता है आपको? Maybe दवाई maybe गलत खा रहे हो। हाँ. हाँ, तो यही आंसर है। Just because you are putting so much effort in doing something doesn't mean the method is correct. You Right. can get So good marks, you can get full marks in your dedication and your efforts and all that. But अगर आपको जाना एक तरफ है और आपको जाना नॉर्थ में है और आप गाड़ी साउथ में भगा रहे हो, फुल स्पीड पे भगा रहे हो और बड़ी डेडिकेशन से भगा रहे हो और बोल रहे हो मैं नॉर्थ में पहुंच नहीं रही हूँ, तो मेथड गलत है ना फिर। yeah, but now I don't know the map, like कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है. वो तो गाइडेंस से ही पता चलेगा ना, DIY से थोड़ी पता चलेगा। वो तो आपको सी, ये सब चीजें अगर हम ट्राई करते हैं और हम नहीं पहुंच रहे हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू सीक गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु नो हाउ टू गाइड यू, तो वही बता पाएंगे ना। Hmm. हाँ, आप घर पे, हम बीमार होते हैं, हम घरेलू नुस्खे कुछ दवाई ले रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे हैं सब कुछ करके, तो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। तो जो इनको पता होगा वही गाइड करेंगे ना, कि आप गलत रास्ते पे हो तो वही गाइड करेंगे ना। आपको कैसे पता चलेगा? आपको थोड़ी पता चलेगा, आपको तो जो पता था आपने कर लिया। Right. Makes sense. सो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो DIY नहीं होती हैं। लाइफ विल टेल यू, लाइफ विल टेल यू कि ट्राई कर लिया है,
अब नहीं हो रहा है तो मतलब सीक गाइडेंस फ्रॉम द राइट पीपल कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे छूट रहा है. Maybe whole method is not wrong, maybe part of the method is wrong, or maybe the complete method is wrong, we don't know. ये तो कंसल्टेशन से ही पता चलेगा. व्हेन यू सीक गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन, यू एक्सप्लेन देम कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों नहीं हो रहा है इतने दिन से, कहाँ पे गैप आ रहा है, खुद से नहीं पता चलेगा. Right, right. आप भी तो, यू आर सेइंग यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन, तो लीडरशिप पोजीशन में आप हो तो आपके अंडर जो टीम है, आप उनको ऐसा खुला ही छोड़ देते हो क्या? वो आपके पास गाइडेंस के लिए नहीं आते? आते हैं. I need to हाँ. supervise also. हाँ, तो फिर तो अगर वो खुद ही करता रहे, कुछ भी करता रहे और रिजल्ट नहीं आ रहे और आपसे गाइडेंस लेने भी नहीं आए और बोले मैं तो कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे उसको? I'll send it to him. I'll send him to any expert जिसको पता है. हाँ. Just like you said. हाँ, Yeah. तो आप करोगे ना वो, तो वही तो हम करते हैं, वो हमें पता है, लेकिन फिर हम जब अपने ऊपर बारी आती है तो हम फिर भी वही करते रहते हैं जो हम कर रहे हैं. नहीं भी हो रहा है तो और जोर से गाड़ी चलाने लगते साउथ की डायरेक्शन में, शायद और एफर्ट्स में कमी रह गई है. पर गलत डायरेक्शन में जाएंगे, गलत मेथड अप्लाई करेंगे तो उससे रिजल्ट थोड़ी आएगा. Yeah, that's right. हाँ, तो कहीं तो वैलिडेशन तो करनी पड़ेगी ना, किसी से मिल के किसी से वेरिफिकेशन तो करानी पड़ेगी ना कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. सेकेंड ओपिनियन लेना कोई गलत चीज तो नहीं है ना. यू वुड एनकरेज योर टीम टू टेक सेकेंड ओपिनियन ऑल्सो ना, तो यू एनकरेज योर सेल्फ ऑल्सो टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन. Yeah, that's right. I'll do it. Thank you so much. नो प्रॉब्लम. Thank you, Anamika. Prakash, your hand is up. You're on mute, Prakash, in case if you have to unmute and talk. Oh, sorry. I come up. Like, I Hi. have two phases of mind. Some periods I am very anxious. Like, I am anxious even to try anything, and I just go into survival mode. But other phases I try to like excel in myself, and it's a diagnosed thing. What I am having is, and this anxiety when it goes off, I bounce back and try to recover from the healing process, like the wounds of the past. But the same pattern again repeats, keep on repeating each and every year. I try to be the stabilized guy, but uh, something happens, some small circumstances or some rejections, and I am really afraid of being loved. So I kind of avoid even my parents' love, my siblings' love, and such things. Like our avoidance due to the fearfulness of falling into a pattern. How to break this? Yeah. Hmm. You are fearful of falling into a pattern while you are already in this pattern. Yeah, yeah. So what are you avoiding The then? You're main already pattern in executing a in the pattern. pattern. Yeah, Hmm. Hmm. So this thing that you're talking about stems from unable to trust someone, and yeah. have to look into the details of why you are not able to trust. Like What is even it? if I trust someone, I'm able to unable to trust myself due to this disorder. Like my self worth itself, it goes from plus 50 plus 100 to minus 100 within few minutes. Like Hmm. Hmm. that's how the my self attitude itself, and Yeah. based on the environment, it gets affected. Small things, small Hmm. life passages, such things. Yeah. Yeah. Hmm.
So these things stem from some unwanted experiences that we have in life, whether that was in your childhood or teenage days. Whenever some unwanted um, experiences happen that uh, taught you this, that you cannot trust people, and the only person that you can trust is yourself. Yeah, But then I will question that also, because this is something people say that I only trust myself, but I doubt that. I would doubt that you trust yourself, because if you would actually trust yourself, then you would be able to trust people also. So yeah, yes, this is only ये सब बस कहने की बात है कि I can trust myself, but if someone can really trust themselves, then it wouldn't matter that if you can't trust others, because if you trust yourself, then anything goes wrong, you will be able to handle it. So yeah, you are not able to handle it, and the only thing you trust yourself is the thing that you say trust is more like synonymous to control in your case. yeah, So yeah. To control. Yeah, you more I like to could control control the things. way, Anything way that you can around. control, you call it trust. But anything you Yeah, cannot yeah. control, that what freaks you out. Beyond my ability. Yeah, Hmm. So these stem from childhood experiences when maybe very controlling parents and yeah, or anyone who was an influencer in your life when you were young. So when we are controlled too much and we do not really learn, they don't empower the kids to make mistakes and learn from those yeah, mistakes, then all of a sudden you grow old, and then you are now required to take ownership and responsibility of things, but then nobody let you take ownership and yeah, responsibilities when you were. So then yeah, so this is that, so that those wounds need to be addressed. yeah. Yeah. You are right. Exactly what happened. Like I had a controllable father, and also like my responsibilities, like I'm unable to take on my own, and I had some fear of failures, but uh, uh, those failures are mainly due to the inability to do so. Like Yeah, not just because of my untalent or not skillful. It's just because of that lack of momentary confidence. response. Yeah, lack of Hmm. confidence. Yeah, Yeah, yeah. So you know your things. So maybe it's not about the skills and all that, but then you are always second guessing your decisions, yeah, yeah. That's right. right? So that's lack of confidence in your own self. So when you say I trust myself, then lack of confidence is not trust your own self as well. Yeah, Hmm. So so these things leave a very big mark, and either the person becomes a perfectionist or a person becomes a procrastinator. And yeah. perhaps you I are struggling procrastinate. with, Yeah, a lot. yeah, Yeah, yeah. So either you become a procrastinator, or you just go into a never ending analysis, overthinking, over analysis. Again, overthinking. I'm Yeah, using the word over here, that analysis is not a problem. Analysis is a good quality. Thinking is a good quality. We should yeah, all be able to analyze and think and all that. But then here I'm talking about over analysis and overthinking. and yeah. um, Every and decision I that's take, the I kind of overanalyze, overthink. Uh, but most of the times it gets right. But while thinking, it exhausts my energy. That's the main exactly, thing. because you don't want to make a mistake. You want to Yeah, be yeah, sure shot. You want a guarantee, yeah, yeah, and this is probably is reflecting in your relationships also, where you want guarantees. yeah, yeah, So there is no guarantee of anything. yeah. Even That's correct. forget about you expecting guarantee from other people. I ask you that, can I expect guarantee from you about anything? You can No, always like try I and am do your best. really mysterious. Even if I am at the best, I will be guaranteed.
But when I am at my workspace, I cannot give you any guidance. Yeah, yeah, that's it's it. it's 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 impossible to give guarantee about anything in life. It's not possible. So I was watching this series, Money Heist. I don't know if you watch Money Yeah, Heist. yeah, You yeah, familiar with that? Yeah. So there is this yeah, character Berlin. You remember that character Berlin? yeah, yeah. Hmm. We had that same similar person. Yeah, So yeah, one thing he talked about. Um, I really liked one example that he took. So his brother, the professor, so he was talking to him once, and he says that in this world, everybody is capable of breaking your trust. Everybody. Then he yeah, takes an yeah, example. He says that, let's say, for example, there is a mother who has two kids, and the mother loves her both the kids very much. Hmm. yeah, Now I kidnap one of those kids and I put the mother in this situation and say that you have to choose between one of them who lives. And if you don't choose, then I will kill both of them. yeah. So now the mother is put in a situation, in a very difficult situation, that she has to choose one over the other. Oh So no, no, whichever no. kid she would choose, the other kid would feel abandoned. The other kid would Yeah, feel that my mother abandoned me. Now she has an yeah, impossible task of choosing one kid. So either she loses both or she lose one. Now this is the thing. Now if she choose one kid and the other thing that, oh, I trusted you and you broke my trust, you chose my brother and you didn't choose me. It's an impossible situation. You put anybody in such an impossible situation. Although I'm taking a very extreme situation over here, but yeah, very similar things happen in our day-to-day life when we have competing priorities. We choose yeah. one over the other, right? Whatever we choose, the person who is getting impacted will always feel bad, Like my and first that's concern is my health, then only the others, friends, relationships, and other things come. So, like anything that affects my health, I give them least importance and avoid it. Okay, and so on. A pattern occurs where it affects my health again, and then I again start to like slowly build up trust to others. Okay, vocal up, but still I won't be. Yeah, the repetitive pattern of negativity comes. yeah, yes. So yeah, so I think you have already started your journey with us. So continue with that, and it's not something that can be just addressed in a short talk, right? Yeah, 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 So I know. these talks that we do are more about getting awareness. See, sometimes people get solutions also in this one. That's not the thing. But what happens that these patterns that we carry, we have been carrying them for decades, Yeah, and what's it's that? not something that can be just addressed in one short talk and all that. Like Yeah, Prashant was talking about, and I mentioned to him that it is yeah, about yeah. his toxic feminine. Now it's not Toxic. that I just tell him some steps. Okay, this is. It's not like that. Okay. But the main advantage of these talks is to get a direction that, okay, where should I be looking? Where am I stuck? Yeah, So the talks or these talks are more around that, more around getting a clarity, because I wasn't really sure कि जाना किस डायरेक्शन, ये ट्राई करना है वो ट्राई करना क्या है, किस डायरेक्शन में देखूं, कहाँ क्या हाँ ट्राई करूं. क्या So भी ट्राई this करो, is एक ही डायरेक्शन में फंसे रहते हो, जस्ट so फंसते हैं. now the direction that I am saying to you is this issue of trust that you have, you are already aware, and that stems. So this is the cause of many problems in life. So not able to trust others is not a very small thing, because we are interdependent. It's not only Yeah, just about our personal life, but in professional life also you will be struggling. yeah, exactly. So Like this in the is not team's a small thing. collaboration.
Yeah, Correct. the same. Correct. So same thing will happen, but in different ways. Same thing. Yeah, This is why I talked about that. It's about the patterns and it's not about the content of it, because everyone is different and everyone will experience different incidents. yeah, People in your life are different, where you work different, your family, your friends, they are all different people, so incidents will be different. But we are not focusing on the incidents, we are focusing on the pattern, and this pattern that you are stuck in is this overthinking, over analysis, not able to trust, and all these things that need to be addressed. Once this is addressed, then all those incidents will change, because your response will start to change there. yeah, yeah, sure. Right? So the step you have already taken, continue that, and Yeah, sure. yeah, let's see where you get with that. Yeah, okay. Thanks again. Okay, no problem. Uh, uh, Praneeth, you're next. Yeah. I have a question on law of attraction. I mean, in general, I don't know much about law of attraction, but maybe since childhood you hear this opposites attract, or like sometimes even in relationship, probably you seek some qualities that you lack in your partner. So I mean, how that kind of correlates. Sometimes I feel like maybe if I find the right partner, it may compensate my shortcomings, and as together we may become whole. So, is that ideas gel with law of attraction? I mean, there's some confusion in that. Anamika, you want to talk about that? Hmm. Hmm. So your question is, Praneeth, that first of all, you said that opposites attract, and in case you attract a partner who is different than you, then she may be, play a role in, how should I say, compensating for your drawbacks Yeah. or limitations. That's what you're trying to Yeah. ask? Hmm. Yes. Hmm. Yeah. Okay. 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 I would simply say that it may appear so that opposites attract, but at a much deeper level, it's not exactly opposites attract. Hmm? Okay. So how do we understand this thing? So let's understand this thing with an example of an anxious, preoccupied person and an avoidant person. Let's suppose whatever kind of avoidant. So if we look at the surface level, these two people actually are very different. So there is one person who is anxious, that person is always available for the partner, while the other person is completely unavailable for the partner. But then how come they feel so attracted to each other? And of course, there's a lot of attractiveness towards an anxious and an avoidant person. So at a surface level, they may look different, but at a much deeper level, it's not that they about the behaviors or actions or how it has manifested in the outside reality. At a deeper reality, the anxious person has the normal tendency, has the tendency of feeling anxious. So how do they feel anxious? How do they even start feeling anxious? Because somebody avoided them, neglected them, abandoned them, or rejected them as a child. And that's why they feel anxious all the time. I'm just giving one example to understand this thing. Now, another person who's always available is not something which matches their frequency, right? Because what they have seen is the neglect and the rejection and the abandonment. So they need somebody who can continue to make them feel the same way. And an avoidant person has that magical thing with him or her that can make this person more and more anxious and allow them to constantly be in that state of anxiety. Why this another person had become avoidant? Because in their life they had experienced a lot of unpredictability, a lot of confusion, a lot of distance, a lot of things, maybe anxious people around them, or things which led them to actually avoiding situations, and they learned that to avoid people. So now the thing is that their
coping mechanism or their first way of dealing with things is just simply avoiding it. Now, what are the things that you avoid? Things that you're uncomfortable with. And what are you uncomfortable with? Anxiety around you. And the moment the anxious partner starts feeling anxious and starts getting needy and clingy, this avoidant person again starts behaving in the same way. He or she avoids. So at a surface level, these two people are opposites attract. Perfect. We in the toxic relationships, we call this a perfect partnership, because both of them have enough to offer to each other, which can continue to make them in the same state where they are coming from, the wounded state, and they continue to be in the same state because that is what is normal to them, right? So likewise, at the surface level, it may appear so that opposites attract, but at the deeper level, if we see, basically the outside relationship that we attract in our life are very much a reflection of the relationship that we have with ourselves. And if the space that we have inside is anxiety, other people could have different behavior patterns. But the thing is that it's the anxiety that is normalized. So we are going to attract everything that can feed onto the anxiety part. Now, that is about the opposites attract part. So it's not about the outside thing. We are talking about what's actually happening inside. The second part of your question, that you have these shortcomings in you, and you feel that somebody else could come up and fill that gap, fill that drawback. Fill the So gap. see, fill the gap, right? Now the thing is that, see, we all need people, right, in life. So it's not about becoming arrogant and going to another extreme that, oh, I don't need anybody in my life. That's not how it works. But the thing is that if we are I'm just talking in terms of law of attraction, that is the topic right now. So if the energetic space and the energetic space includes mindset, includes emotions, includes deeds and actions, that space is what? That I am half, and I am I have drawbacks, and I have limitations, and I have this, and I have this. And if you realize this thing, and you come with a space where you can take help, and somebody can come and compliment you, and you do this because you love yourself, so you can always take help from other people, and that's how it behaves. But if the space is still in the trauma area, and you expect that somebody else would come and take responsibility of it, the thing what happens is that no matter how much the person does, your state is still of feeling that gap. See, he living in that gap. So no, regardless of the factor what they Feeling the do, scarcity. you will continue. You continue to feel the same way, because this space has not been treated. So now what even happens? That's why we say, like, let's suppose we are operating from these states, right, where we are wounded, and somehow galti se aisa ho gaya that we end up attracting a healthy, secure partner. But the space has not changed. So for an example, let's suppose you have trust issues, and you find somebody who is trusting and trustworthy. But the thing is that you have trust issues. Then even if no matter how much this person is trustworthy and trusting, you have trust issues, you're going to question this person as well. And you continue until and unless you deal with this particular thing of why you have trust issues, you're going to question. And the people you attract, they're going to feel that I am being blamed for the crime that I've not even committed. And then they are going to leave you. Again, creating the same scenario, the same self-fulfilling prophecy that I cannot trust people. So this space needs to be worked upon. See, bringing people in our lives to complement us is good. It's healthy. It's supposed to be there. If we are in a healthy mindset, we are always going to allow people to come and complement us, right? Now, the thing comes that, are we doing it for love or from love?
Because if you're doing it for love, then that means that our vessel is empty, and it has a hole. No matter how much somebody else or anybody fills it, it has a hole. It has a leakage. So it's just gonna go away. But if we fill that hole and we know how to, now we are operating from the space of love. So now there's no problem, right? That somebody comes, compliments you, fills more of your jar. That doesn't even matter, right? So you become easy flowing, that you are okay to take help, to get to work with people, to work together with people and operate. And that's how healthy relationships or healthy mindset is supposed to be. But not that, it's not how, like, I am half and you are half. So two half people cannot make one complete whole. Only two complete people can make complete whole. Right? Because if you're half yourself, no matter how much you try outside and how much somebody else fills you, you're going to be half only. Right? And the same is vice versa. No matter how much you try, because you are in that space. So when it comes to us, whether be it about healing ourselves or law of attraction, it's this space that we have inside ourselves where we need to work upon. So, there is one conversation we had on this topic. It's called Love Math. It's there on, our YouTube channel. You can listen to it sometime if you want. So how in relationships maths work? Normally, math says that half and half equals to 1. But in relationships, half and half equals to half. Right? It's 1 plus 1 equals to 1. So that's how it works a little bit differently in relationships. Okay. Yeah, I think That key takeaway answers is your like question, you Pranit. can depend. Yeah, I mean, in the sense that you can rely on other people, you can depend on other people, but you can't expect other people to heal you if you have deeper roots. Right? That's The responsibility of our space is only ours. We can take assistance from people. We can walk with people. We can spend life with people. But the responsibility of what we have inside us is only and only ours. Nobody else is supposed to take responsibility for you. And also, in the same way, you are not responsible for the space that somebody else carries. It's their responsibility. They need to own it. They need to take responsibility for what they hold in their vessel. So Again, these things are very easy to look at when we see some physical examples. This is why we tend to give more physical examples, because we relate to them. So let's say, for example, you fall sick, um, you have fever or whatever you have, and so your people around you, your parents or your partner or your brother sisters, they can be supportive. मेडिसिन तो आपको ही खानी पड़ेगी ना. So you have to go to the doctor, you have to take the treatment, you have to eat the medicine. Other people can give you the environment to make your life easy, make it more comfortable for you, be more supportive and all that. That can be there, but it is not their responsibility to heal you. You have to take the responsibility that you are sick and you want to go. You should be wanting to go to the doctor. It is not their job to push you to go to the doctor. You feel that, okay, I am not 100%, I don't like to be like this, I want to get better, I want to, and then you ask, and maybe somebody will drive you to the doctor and you can take the help, and maybe you are lying on the bed, someone will make a meal for you or look after you, and they can make those things, do that for you, but they can't be the one who will be saying, no, Praneet, go to the doctor, and you say, no, I'm too busy, I have to do work, I have to do this, and now I've got too many things going on right now, I can't. So you can't be expecting people to be pushing you to heal yourself.
So that's the thing. And then again, another example which doesn't, another example I want to take, which is probably not applicable to you in this conversation, but using this conversation right now for other people who are listening. Another example that I give, which which people say, like I want to heal myself, but then my partner doesn't want to do anything. So then they are also not doing anything because their husband or their wife is not going to do anything. So they feel that what is the point? What is the point? I do something, work on myself. वो तो करने नहीं वाले कुछ. So again, I give this example. I say, let's say for example, you are in a boxing ring, and the husband and wife are throwing punches at each other. Both are bleeding. दोनों का नाक टूटा हुआ है. दोनों they are bleeding and all that. And you are saying, I am not going to see a doctor and fix myself because my husband or my wife is not doing that. It doesn't make any sense. If I am bleeding and I have injuries and all that, how is that? How does it matter the other person is not seeing a doctor and the other person is not healing themselves? So I will also not do it. And I'm taking this physical example because this is more easy to relate, क्योंकि ये हम करेंगे नहीं. When we are in that physical situation, we will see that it doesn't make any sense to not do that. Yes, I am bleeding, my nose is broken, or my ribs are broken, and I've got so many cuts and bruises and all that. I need to go and see the doctor. Of course that you want your partner to go and do that, but अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप थोड़ी रुकोगे, आप तो जाओगे ही ना. Yeah, I need to step out of the boxing ring first to heal. But people often go with this, and I realize this, but my husband will not take any help, my husband will not do this, or my wife will not do this, so that's why it just doesn't make sense. Just doesn't make sense. If the other person is not doing it, then how is that? How are you so codependent that even your own healing you are relying कि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक मैं भी नहीं करूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है. कैसे मतलब नहीं है? You are injured, you are suffering, you are impacted. So this thing people overlook. So yeah, our partner and all that can be a support system for us. They can be there. They can help us, and we can be there and all that. That is always there. But now that we are grown-ups and we cannot be हम 10 साल के बच्चे नहीं हैं कि जब तक हमको पेरेंट्स लेके नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास तब तक हम खुद नहीं जा सकते. We are not dependent like that on anybody now. Right. So we can look after ourselves. So and we should and we must take that step that we do that. We identify where I need help, whether it's physical wounds, emotional wounds, mental wounds, whatever it is. When I identify, I need to take care. And then people around me, if they provide me support, good. If they don't provide me support, what can we do? We still have to do what we need to do. So it cannot be dependent on what others will do or not do. I just have to still take the responsibility of doing what I need to do. And that is why when Anamika was talking about that, when two unhealed people come in a relationship, when two halves come in a relationship, they don't make one. They don't complete each other. Two incomplete people cannot complete each other. It's a myth. It doesn't work like that. Two complete people come in a relationship, they can enjoy the relationship more because none of them are putting the responsibility on the other person. So उसमें क्या होता है कि when you don't put the responsibility of anything on the other person feels liberated to then come and participate. Otherwise the other person feels obligated to participate. और वो ऑब्लिगेशन जब फील होती है तो इट रन्स आउट. द स्टीम, द पेशेंस, द टॉलरेंस, इट ऑलवेज रन्स आउट.
because वो 6 महीने हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, 2 साल, 5 साल, but the steam will run out because the other person will feel कि मेरे बिना तो होता ही नहीं है कुछ जब तक I will not do this. So it's like that. So it cannot be like that. You free the other person from the obligation, then the other person feels like participating. The other person feels like participating, coming with you and cooking and doing things and all that. जब वो obligation से आता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो उनको lack of free will, lack of freedom लगती है उसमें. तो उनको ऐसा लगता है कि इसका जो मिसिंग पार्ट है, दिस पर्सन इज रिलाइंग ऑन मी टू कॉम्पेंसेट ऑन दैट मिसिंग पार्ट. तो ये खुद तो अपना मिसिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करके फिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इज जस्ट काइंड ऑफ डेलीगेटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि तुमको ये चीज सही है तो तुम ही देख लो इसको, जबकि वो it doesn't, it's nobody likes that. Nobody likes to take the responsibility of another person that way. Yeah, cool. Yeah, should we move to the next person, Praneeth? Is it? Yeah, sure. I got my answer. Okay, good. Okay, thanks. Who's next? Payal, your hand is up. Yeah, hi Dharma, hi Anamita. Hi. So, I just want to ask, this is related to the question I asked 2, 3 days back regarding my son. So, I feel that maybe I had healed from my relationship issues with my husband, but maybe that is the unhealed part, and that fear I'm attracting through my son. Mm-hmm. Yeah, so that's what I want to know. नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. The fear I have that my son would become like my husband. So that fear has turned into a law of attraction. So like I'm attracting that situation in my life. That's what I want to know. And how can I deal with it? See, there is no dealing with it as such. Why you want to deal with it? You have to get rid of it. Yeah, how to get rid of it? See, again, how to get rid ka to, like I was talking to somebody, the objective of these calls is more like we can give some direction as to what. Yeah, so yeah. ऐसा इसमें है ना, so that is the thing. So how to do is looking at the insecure attachment style and where this insecure attachment style, these fears have come, and all that. So हाँ, ऐसा कह देना तो आसान रहता है कि it has come from my husband, but I tell you that majority of the time you will see that those fears and insecurities you were already carrying. You walked into the marriage with those fears and insecurities. So many a times we are carrying things that we are not aware of. हाँ, दूसरे लोग क्या करते हैं ना कि वो हमारा कप छलका देते हैं. वो ओशो की स्टोरी तो मैंने कई बार बताई है, आपको याद है? कप वन. हाँ, so for others who are on the call, new ones, so this is one of the Osho stories that I constantly use to explain this situation. Is Osho once talks about this story कि there is a guy in a party, he fills his cup with the tea, तो वो पूरा भर जाता है टी से ऊपर तक. एंड मेनी अ टाइम्स यू वुड हैव एक्सपीरियंस कि जब हमारा कप ऊपर तक भर जाता है तो हम बहुत संभाल के चलते कि वो छलक ना जाए. जी ना, तो ही इज वॉकिंग वेरी विद फोकस्ड, मेकिंग श्योर कि डजंट स्पिल. And then all of a sudden a waiter comes from somewhere, bumps into him, and then the tea spills. And then Osho asks, why did the tea spill? तो अभी लॉजिकल
तो ऐसा लगता है कि ये क्या क्वेश्चन हुआ ना, तो ये तो कॉमन से तो बच्चा भी बता देगा कि द टी स्पिल्ड, क्योंकि कोई टकरा गया। अब ओशो इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो कुछ तो इसमें डेप्थ रहेगी, दैट इज व्हाट वी गो बाय, कि ओशो ऐसे बचकाने क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। तो then Osho says कि the tea spilled because the cup had tea in it. If the cup had milk in it, milk would have spilled. If the cup had juice in it, juice would spill. अब ये आंसर सुन के भी ऐसा लगता है हाँ ये तो बात सही है, लेकिन इससे ये तो मतलब ये क्या बात हुई, वो तो है ही, जो होगा वही गिरेगा। तो एग्जैक्टली व्हाट इज ओशो पॉइंटिंग टू? व्हाट ओशो इज पॉइंटिंग टू इज दिस टी, दिस कप इज योर हार्ट। व्हाट आर यू कैरिंग इन दिस हार्ट? लोग तो टकराएंगे ही, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि लोग टकराएंगे आपसे, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप बचा बचा के चल रहे हो, अभी तक बचा बचा के चल रहे हो, किसी कोई टकराया नहीं, गिरा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो छलक क्या रहा है? अगर फियर छलक रहा है, अगर इनसिक्योरिटी छलक रही है, अगर एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये छलक रहा है कप में से, तो वही था ना कप में। वो आया थोड़ी है, वो किसी ने डाला थोड़ी है, वो तो आप ऑलरेडी भरा हुआ था कप आपका उसमें। हाँ, अभी आपके हस्बैंड आ गए, आपकी शादी हो गई, नाउ वो बार बार बम्प कर रहे हैं और वो बार बार छलक रहा है, तो वो उन्होंने थोड़ी डाला है, वो तो कहीं से आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो। अभी वो कहाँ से कब डल गया, कब क्या हुआ, और फिर उसका नेक्स्ट नेक्स्ट इसका व्हाट इज द लेसन दैट ओशो इज गिविंग, कि वो कप में जो है, लोग तो छलकाने वाले आएंगे ही, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। Nothing you can do. You can't control other people from saying something, doing this or not talking like that or this that. वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फोकस तो हमें अपने कप पे करना है ना। तो अगर कप में आज ये चीजें भरी हैं, तो इसको खाली करके कुछ ऐसी चीज भरो ना, तो जब छलके तो उसको छलकने में मजा आए, क्योंकि कप तो छलकना ही है, लोग तो टकराएंगे, कप में से तो कंटेंट निकलेगा ही बाहर। अब क्या बाहर निकलेगा ये तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यू कैन फिल इट विद लव, यू कैन फिल इट विद जॉय, यू कैन फिल इट विद हैप्पीनेस, कि लोग टकराएंगे, टकराने दो, यू स्टिल हैविंग यू स्पिलिंग आउट लव, यू स्पिलिंग आउट ऑल दीज थिंग्स, वो तो होने ही वाला है। यही हम कर सकते हैं ना, ना तो हम लोगों को रोक सकते हैं, और ना ही उस कप में कुछ ना भरे, ऐसा भी नहीं हो सकता। कप में कुछ, हार्ट में कुछ ना कुछ तो भरेगा ही, क्या भरें ये ध्यान देना है। और वो भरने के लिए पहले जो भरा हुआ है, पहले उस कचरे को बाहर निकाल के उस कप को साफ करके तो भरेंगे ना। उसी में ही अगर कप में ऑलरेडी गंदा पानी है, उसी में आप जूस डाल दोगे तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेगा उसका? जूस भी तो गंदा ही होने वाला है ना। तो पहले उस गंदे पानी को फेंक के जूस भरो ना। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि कहाँ से भरा है, कब भरा था, कब भर गया, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब कौन से इंसिडेंट्स थे जो ये भर गया था। हाँ, शादी से पहले छलका नहीं या कम छलका तो आपका ध्यान नहीं गया, शादी के बाद ज्यादा छलकने लगा, आपके हस्बैंड से ज्यादा टकराने लगे, वो ज्यादा छलकने लगा, तो ये लगता है इनकी वजह से हुआ। किसी की वजह से नहीं होता है, हम पहले से ही उसको लेके बाहर चल रहे होते हैं। वी वर प्रोटेक्टिंग इट सो वेल कि वो छलक नहीं रहा था, या कोई नहीं आया था छलकाने के लिए। तो these things need to be looked into, these things need to be addressed, otherwise there is no way out of So this. this is something which needs a lot of effort or work on self. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एफर्ट तो आपका अभी भी लग ही रहा है ना। अभी कौन सा कम But एफर्ट when लग even रहा है? know, see, हाँ, effort लग रहा है, but no outcome is coming. हाँ, I'm still एग्जैक्टली। circling in that. हाँ हाँ हाँ। तो एक होता है, सी एफर्ट तो बोलने के लिए बोलने वाली बात है, लेकिन एक होता है कि हम बीमार होते हैं तो उस बीमारी के साथ रहना भी एफर्ट है, और उस बीमारी का जब हम इलाज करवाते हैं तो वो भी एक एफर्ट होता है। हमें जाना है, कोई किसी को कैंसर है तो कैंसर के साथ रहना भी एक एफर्ट है, और कैंसर की ट्रीटमेंट लेना, कीमो करवाना, ये करना, वो भी एक एफर्ट है। एफर्ट तो दोनों ही तरफ से है ना। तो एफर्ट तो हम एफर्ट पे ध्यान देंगे तो उस पे नहीं है ना। एफर्ट्स दोनों ही तरफ से लगने वाले हैं, देयर इज नो अदर, लाइक लाइफ एफर्टलेस तो अभी है नहीं ना। बट When we have to राइट काइंड ऑफ concentrate on एफर्ट्स कैन लिबरेट यू, okay. है ना। राइट काइंड ऑफ एफर्ट्स कैन लिबरेट यू, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन दिस एफर्ट ऑफ
मैनेजिंग इट, डीलिंग विद दिस एंड ऑल दैट, कहीं जाने वाला नहीं है वो। कप को संभाल संभाल के चलना भी तो एफर्ट ही है ना। I'm इससे tired अच्छा of है कि being so stuck. हाँ I'm tired of being so stuck. हाँ हाँ, तो वो दैट so that is there. So हाँ, so all I can say is you start that by doing unstuck yourself workshop, वहाँ से start करो, and then this is that's the journey that we have created. There is a set of 3 workshops that we have created. Starts with unstuck, and many people have gone through it. Unstuck has been done by more than 600-700 people so far. उसके आगे भी, आगे के स्टेप्स भी अभी बहुत लोगों ने ले लिए। सो हाँ, अब वैसे ही है हमारे पास तो। दैट्स द प्रूवन मेथड प्रोसेस दैट वी हैव गॉट, एंड पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम दैट, सो दैट्स ऑल आई कैन रेकमेंड। All right. Thank you so much. No problems. Who's next? Sam, your hand is up. Hi, Kama. Hi. First of all, thank you to you for doing this session. I mean, just before the, because I think necessary. Sam, your voice is breaking. You're not very Wait a clear. second. Is it okay now? Yeah, this is much better. Yeah. Okay. So first of all, I want to thank you guys, Karma and Anamika, for bringing this session just before the full moon. I have been in this in this law of attraction thing, like more than 5 or 6 years, and I have been observing myself a lot, I think. And recently, I was thinking I have improved a lot, and I know where I have done major changes in my life, and I think it was very good for me. But I found out somewhere I'm still hurt for what happened in my past, and I don't know how to get out of it. Uh, I have a few questions. I shoot them all together or one by one. One by one. So first of all, thing most of the queries are being resolved. Just one thing that I still don't know. I have observed that I am still hurt from my past experience, whatever happened, and I just want to know how to overcome it, how to change that. Like अभी ओशो स्टोरी आपने बताई, तो उससे मतलब ये तो पता चल गया कि हाँ मेरे में अभी हर्ट भरा हुआ है तो वही निकलेगा बाहर। बट उस हर्ट को लव में कैसे बदला जाए, वो स्टेप्स आई थिंक आई हैव बीन डूइंग माय मेडिटेशंस, माय विजुअल मेडिटेशंस एंड एवरीथिंग, एंड व्हाटएवर आई हैव नॉलेज ऑफ। और मैं अभी सब चीज खुद से ही कर रहा हूँ, मेरे में बहुत सारा चेंजेस भी आ गए हैं, बट स्टिल आई समवेयर फील कि हाँ थोड़ी बहुत कमी है जो मेरे में अंदर है। चीजें होती हैं, गलत होती हैं, आई फॉरगिव अदर पीपल्स, आई मतलब ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, चलता है, सब सही है, सब मतलब परसेप्शन का खेल है। आई गिव देम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, मेरे लिए शायद कुछ अच्छा होगा, मेरे को इसमें कुछ सीखना होगा। बट स्टिल समवेयर टू क्लियर इट मोर आउट, आई वाज इन अ रिलेशनशिप लाइक लास्ट 2 years, जब ब्रेकअप हुआ है, 2 साल हो गए। एंड उस ब्रेकअप के बाद आई फील वेरी एग्रेसिव एंड वेरी हर्ट, बट आई हैव वर्कड इट आउट। बट वो हर्ट कहीं ना कहीं अभी भी है, तो वो चीज समझ में नहीं आ रही मैं उसको कैसे, उस हर्ट को कन्वर्ट करूं इन लव। अभी भी अगर मेरे को उसका ख्याल आता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा आती है, जो चीजें मेरे संग हुई। बट आई मतलब मैं उसमें ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे संग क्या क्या अच्छा हुआ, मैं उसको भी ब्लेस करता हूँ कि ठीक है जो भी हुआ सब सही है। इनफैक्ट आज ही मेरी उससे बात हुई दोबारा, एंड शी टोल्ड मी क्या कहते हैं कि अभी उसकी लाइफ में जो जो चीजें चल रही हैं, और मैंने क्या कहते हैं आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि वो बहुत खुश है, और मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई कि आई लिटरली ब्लेस्ड हर एट दैट मोमेंट ऑल्सो।
अंदर से ही। और मैंने उसे तब भी बोला, क्या कहते हैं, मैंने उसको मैसेज भी किया, आई स्टिल फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू, कि तेरे संग जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एंड समवेयर आई एम इमोशनली हैप्पी एट दैट पॉइंट। बट स्टिल समवेयर कभी कभी ना वो चीज, वो हर्ट दोबारा आ जाता है, एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो एक चीज तो ये है। हेलो। Hmm. So, okay. So you are blessing her and everything. तो दिक्कत कहाँ है? द क्वेश्चन इज कि वो जो हर्ट है उसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन लव, बट आर देयर एनी अदर थिंग्स जो मैं शायद, मतलब मेरे को करना चाहिए, या फिर जो मैं नहीं कर पा पर रहा हूँ। आप क्या कैसे करने की, मतलब why you can you tell me like what is it that you're doing to convert it? I am doing Ho'oponopono techniques. I am just visualizing her and bless her. जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी चीज नेगेटिव आती है, मैं विजुलाइज करता हूँ उससे, पॉजिटिव कन्वर्सेशन करता हूँ माइंड में, तो और उसको आपको ब्लेस करता हूँ। आपको ये कैसे मालूम है कि ये करना है? ये कैसे मालूम है? एक्चुअली हाँ। मैंने कई सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पहले तो ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट वर्कड ऑन यू, वो बाकी चीजों पे वर्क नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं इस चीज नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ हाउ डिड यू नो कि यहाँ से स्टार्ट करना है? लाइक हु टोल्ड यू कि यहाँ से स्टार्ट करना है? आई हैव बीन रीडिंग मैनी बुक्स लाइक नेवल गॉडार्ड एंड जोसेफ मर्फी एंड one more Jose Silva, and there are many people I have been reading all of them, and I have read them. और अभी मैं, मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को अंदर से जो फील आता है कि मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है, मेरे को ये चीज कंफर्ट कर रही है उस चीज को बनाने में, तो मैं वो चीज करता हूँ। अच्छा, अभी एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक हम्म, है? आई गॉट माई आंसर. हम्म, Let's say you are walking on the road and you got hit by a car. हम्म, और आपकी टांग टूट गई है, आपका सिर फूट गया है, खून आ रहा है, ऑल दैट इज देयर. हम्म, और मैं आता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आई नो वेरी गुड होपोनोपोनो टेक्निक, डू हम्म, दैट, फॉरगिव द हम्म, ड्राइवर. हाँ, करोगे? हाँ। इस चीज में तो मेरे ख्याल से अगर इंटेंशनली किया है उसने तो समझ में आता है, बट आई थिंक। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल इतना है कि मैंने आपको आके ये बोला कि इट विल यू विल फील गुड, ये आप करो, आप करोगे, उस टाइम आपका क्या आंसर रहेगा? यू आर ऑन द रोड, आपकी टांग टूटी हुई है, खून बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको बड़ी अच्छे ओपोनोपोनो टेक्निक सिखा दूँ. टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा सिर फूट गया था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, और मेरी चेस्ट में मेरा मसल आई थिंक फट गया था। तो मेरे गिरते ही सबसे पहले, और मेरे को ये पिछले साल हुआ था, और ये मैं आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसमें मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशंस करते हुए मेरे को 5 साल हो गए थे जब तक। तो गिरते ही जब मेरे खून निकलना चालू हुआ, मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आया, आई डोंट नो व्हाट व्हाई दिस हैपेंड, बट दिस मस्ट बी हैपेंड फॉर समथिंग वेरी 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 गुड। और मैंने उस ड्राइवर को बोला, जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल दिस कम टू माई माइंड। सही है, पर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मैं होपोनोपोनो टेक्निक सिखाता हूँ. तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा उस हूँ वक्त नहीं कि था ऑब्वियस। आप उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाओगे, अपना इलाज करवाओगे, या होपोनोपोनो से आपका काम हो जाएगा? मैं नहीं, ये उस वक्त पूछ तो रहा हूँ डॉक्टर के पास ही जाऊंगा, उस वक्त तो डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ऑब्वियसली। आपसे, राइट? तो ये आपको मालूम है, हाँ, ये आपको मालूम है इंट्यूटिवली, कॉमन सेंस, ये आपको मालूम है हाँ, हाँ, कि हाँ, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, आई एम हर्ट एंड आई नीड टू सी अ डॉक्टर, आई नीड टू गेट दिस थिंग फिक्स्ड. ये हाँ, हाँ। ओपोनो ओपोनो या मेडिटेशन से हील होने वाली चोट नहीं है, हम्म। करेक्ट? ओके, यस। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग. सो व्हाट शुड आई डू? You have to seek
guidance for this thing. Why you got hurt like this? You encountered an accident, you had an emotional mental injury, और उसको आपने एड्रेस नहीं किया है, तो वो बार बार बाहर आती, उसका इलाज तो हुआ नहीं है, तो उसकी दुख तकलीफ तो बार बार आएगी ही बाहर। आपकी अगर हड्डी टूटी रहेगी और आप बैठ के ओपोनोपोनो मेडिटेशन करते रहोगे, तो वो हड्डी तो आपको फील कराती रहेगी ना कि भैया मैं टूटी हुई हूँ। सही बात है। तो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन हु टोल्ड यू कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको किसी ने आपने ठीक है, आपने बुक पढ़ी, ये सब किया, वो सब ठीक है, लेकिन यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कैसे पता है आपको? ये तो नहीं पता है ना आपको। जब मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, एक तरह से इंट्यूशन मान लीजिए आप, और मेरे को आई डोंट नो, मेरे को ये इन सब लोगों के साथ, मतलब सॉरी बट आप सब लोगों के साथ ये सब करना, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये इंट्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, when this breakup happened, तो I was like very anxious, मैं सो नहीं पा रहा था, और सब चीजें, मतलब खाना पीना सब छूट गया था। तो I used to do meditation to control myself, और मैं बैठ गया मेडिटेशन करना। I follow सदगुरु जी at that time, और उनकी मेडिटेशंस करता था मैं। सो आई सेट दैट टाइम, और मैं ये इंटेंशन लेके बैठा कि अब मैं जब तक नहीं उठने वाला, जब तक ये जो फीलिंग है ये सही नहीं हो रही। एंड मैं 10 मिनट के लिए बैठा हूँगा। 10 मिनट के बाद आई वाज लाइक नॉट इन माय बॉडी, मैं कहीं और ही था, मेरे को नहीं पता, मैं अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा था। एंड आई वाज फीलिंग फिल्ड अप विद, मतलब फियर वगैरह, एंशियसनेस सब खत्म हो गई थी, और आई वाज फीलिंग माई सेल्फ एवरीवेयर। और उस चीज के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि ये अपने आप ही आया था, ऐसा नहीं किसी ने जवाब दिया है, कुछ दिया है। वो होता है ना कि आपके दिमाग, आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो, वो लेकिन आपके सामने आपको नहीं मिलता, फिर एकदम से आपको दिख जाता। तो वो चीज अपने आप ही आई मेरे दिमाग में कि और शिव जी बैठे हुए हैं मेरे सामने, एंड ही ओपन द बुक ऑफ नेवल गॉडार्ड, और मैंने पढ़ता था नेवल गॉडार्ड उस वक्त। तो ही ओपन द बुक ऑफ नेवल गॉडार्ड। तो मैंने फिर ठीक है, मैंने वो समझा, मतलब पता नहीं, ये चीज एक इंट्यूशन सा हुआ मेरे को। मैंने फिर वहां से नेवल गॉडार्ड का पढ़ना वढ़ना और चीजें समझना चालू किया, वो बुक पढ़ने चालू की। पहले मैंने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस ही देखी थी, फिर मैंने बुक पढ़ना चालू की। फिर वहां से ही कैरी होते होते मेरे होपोनोपोनो वाले टेक्निक यूज करनी चालू की। तो ये चीज मेरे को वहां से आई थी। और हाँ, आप कह रहे हो कि ऑब्वियसली मेरे को जाना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, तो इससे तो आप बता सकते हो, तो आप बताओ क्या करना चाहिए फिर? व्हाट यू आर सेइंग वो मैं समझता हूँ, और वी आर एक्चुअली जो आप मेरे को एग्जाम्पल दे रहे हो ना, वो एग्जाम्पल एकदम लाइक एग्जैक्टली व्हाट आई एम आल्सो सेइंग कि जो ये फीलिंग आई है, मैं वो फीलिंग को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिनाइंग कि मेडिटेशंस आर नॉट गुड एंड ऑल दीज थिंग्स। हमने तो खुद ही एक ई लर्निंग जर्नीज की लाइब्रेरी बनाई हुई है। अनामिका हैज क्रिएटेड सो मेनी मेडिटेशंस एंड सब्लिमिनल्स। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो मेडिसिन किसी और प्रॉब्लम की है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे आपने कुछ मेडिटेशन किया, आपको बहुत अच्छा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, वो सब ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन वो खत्म होने के बाद तो आप वापस यहीं आ गए। तो ये आउटर बॉडी, चलिए सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, हम इस चीज पे फोकस रखते हैं ना कि अभी भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है, तभी तो हम बात कर रहे हैं ना। हाँ, यस, है ना। तो क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं बनी होती, आप काफी बदल गए होगे, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो है। तो एंड यू आर सीकिंग कि करना क्या है, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये मेथड जो आप अप्लाई कर रहे हो, ये मेथड इफेक्टिव नहीं है उस चीज के लिए। ये मेथड किसी और चीज के लिए है। तो आपको ये करने से वो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, कोई दारू पीने बैठ जाता है, कोई पेन किलर करे, वो तो यू नो देयर आर मेनी वेज टू नॉट फील द पेन।
Yes, yes. Problem is that is not a solution. You're not feeling the pain is not the solution. Okay, getting free from the pain is what we are talking about. कि वो तो थोड़ी वो हुई, वो एक्सपीरियंस आया, फिर हम उस एक्सपीरियंस से चिपक जाते कि अरे वो करके बड़ा अच्छा लगा था, अब दोबारा क्यों नहीं हो रहा, उस टाइम तो हो गया था, फिर अब नहीं हो पाता है वो and all Yes, that. yes. That is तो so true. वो एडिक्शन है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, और वो एडिक्टिव हो जाता है वो बिहेवियर. आई हैव नोन पीपल हु आर एडिक्टेड टू मेडिटेशन, जस्ट एनीबडी हु वुड बी एडिक्टेड टू अल्कोहल. देयर इज नो डिफरेंस. Got तो that. तो पहले बात तो इस चीज से ही बाहर निकल के आंसर को सुनोगे तो समझ में आएगा कि ऑल दीज थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म्स, क्योंकि ये इस पॉइंट की ये मेडिसिन है ही नहीं. मेडिटेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स, as I was talking earlier, I don't know, did you join recently or आप कब शुरू से हो इस कॉल पे? नहीं, मैं अभी आप तब आया. Okay. Actually, तो I ऑफिस was से आया. हाँ, तो I was covering this thing कि ये हीलिंग और ये जो आप बात कर रहे हो मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो डिफरेंस है इज लाइक यू आर इन नेगेटिव एंड यू वांट टू गो इन पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने के लिए आपको जीरो से होकर गुजरना होता है. तो नेगेटिव से जीरो पे आने का जो प्रोसेस है उसको हम हीलिंग बोलते हैं. जीरो से पॉजिटिव पे जो जाना है उसके लिए जो आप ये टेक्निक्स लगा रहे हो वो वहां पे काम करेंगी. पहले उन चीजों को एड्रेस तो कर लो. तो these techniques, these things are more about your emotional mental immunity. आप जब बीमार होते हो तो उस टाइम पे आप बीमारी का इलाज करते हो, उस टाइम पे आप इम्यून सिस्टम के ऊपर इतना फोकस नहीं करते हो, क्योंकि अब तो आप बीमार पड़ चुके हो, है ना. डॉक्टर आपको पहले दवाई देगा और वो बोलेगा इससे बाहर निकलना. अब जब आप एक बार एंटीबायोटिक्स खा लोगे, दवाई ले लोगे, बाहर आ जाओगे, उसके बाद वो आपको बताएगा कि ओके दोबारा बीमार ना पड़ो, उसके लिए मे बी एक्सरसाइज, डू दिस हेल्दी डाइट्स, और यू नो रोज ये काढ़ा पिया करो, या ये करा करो, ऐसा करा करो. Those are the things which you apply so you don't fall sick. Got that. That is what meditations and these things are for, to keep your energy level uplifted. लेकिन गिर गए एक बार घोड़े से नीचे तो ये आपको uplift नहीं करेंगी. Okay. है ना. तो यहाँ पे पहले इलाज करवाना पड़ेगा. इलाज करके पहले घोड़े पे बैठ जाओ और फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू दीज प्रैक्टिसेस. दीज आर गुड प्रैक्टिसेस बट दीज आर नॉट हीलिंग प्रैक्टिसेस. These can help you to be in a good vibrational state. इलाज क्या है? हाँ, इलाज it's about addressing this insecure attachment style. So आप हमारे साथ कब, you recently joined our community? नहीं, I am मेरी बात हुई थी, I think 2 दिन पहले ही हुई है. किससे? कैसे? अच्छा, नामिका से. ओके ओके ओके. I am in the group में, बट मैं एक्चुअली ऑफिस का ऑफिस का काम ऐसा होता है. आपकी आवाज फिर से ब्रेक होनी शुरू हो गई. हेलो, इट्स ओके ना? दिस इज बेटर. हाँ बेटर. हाँ. So, मेरा ऑफिस का काम इतना होता है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं ग्रुप में कुछ एक्टिवली पार्ट ले पाऊँ. हाँ, मैं ग्रुप के जितने भी मैसेजेस हैं वो थोड़े बहुत पढ़ता रहता हूँ जब जब टाइम मिलता है मेरे को. मैं हूँ ग्रुप में बहुत टाइम से. अच्छा अच्छा अच्छा. तो आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू स्टार्ट बाय डूइंग अनस्टक योरसेल्फ. वहां से आपको आंसर मिलने शुरू होंगे. तो यूजुअली वी वर डूइंग अनस्टक योरसेल्फ ऑन संडेज, बट लेटली बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन एंड मैनी और बाकी लोगों का भी डिमांड पे अभी व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ recorded version of this workshop also. Okay. So I would recommend that you do that. वहां से आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ अटके हो. Got that. तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ढूंढ रहे हो तो that is the starting point from our side, I would say. क्योंकि बहुत चीजें मिस की हुई हैं आपने, बहुत चीजें मिस की हुई हैं. तो पहले वो देख लो कि मिस क्या क्या किया हुआ है. ये कितने टाइम का होता है और क्या मतलब वो क्या रहता है? 3 hours का है. दिस इज अ रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द
वर्कशॉप 3 hours की है एंड we'll put you in the interest group. वहाँ पे आपको आगे की information मिल जाएगी. Okay, thank you. We'll share the फिर link in the group, so anybody on this call who still doesn't know anything about that workshop, we'll post a link in the community group. okay, तो okay. वहाँ से आप interest group में आ जाना. See what happens ठीक है. that because we have now almost 760 people in the community, तो हम ना unnecessary के messages नहीं डालते रहते कि ये workshop हो रही है, वो workshop हो रही है. तो हमारा plan pattern ऐसा रहता है कि we have created certain interest groups. तो जिनको भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, हम उनको बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आगे की बात होगी. अदरवाइज हम वी डोंट वांट टू फ्लड एवरीवन विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैसेजेस इन द कम्युनिटी ग्रुप. समझ तो गया. टाइम टू टाइम वी कीप पोस्टिंग कि ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, यहाँ आ जाओ. सो इंटरेस्ट ग्रुप में रहने का कैसा होता है ना कि आप आ जाओ, उसमें क्या है, अगर आप इस संडे को अवेलेबल नहीं हो, नेक्स्ट हो, एटलीस्ट इंटरेस्ट ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि when is the next one happening and all that. तो ठीक है. तो जब रेडी हो तब कर लेना. एंड That's very good. मैं रिकॉर्डिंग सेशन में अगर कोई क्वेरी रहती है तो हाँ तो पूछ लेना. यू विल बी पुट इन अ ग्रुप जहाँ पे और लोग भी वो रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं. तो whoever signs up for the recording we put them in a special group. तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं. गॉट दैट. थैंक यू. ओके, तो बाकी क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करो. हाँ पूछो. मैंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया है कि लाइक पहले मेरे को लगता था कि शायद मैनिफेस्टेशन खुद पे ही वर्क करता है, बट अब मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व करी हैं और ये मेरे को जस्ट कंफर्म करना है. मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व करी हैं कि अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो या फिर कोई ऐसी जो आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब लाइक किसी और की अच्छी हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वर्क करता है. आई जस्ट वांट टू कंफर्म, डज इट वर्क लाइक दिस और नॉट? मैंने दो Yes, चीजें it can work. मैनिफेस्ट करी It हैं. can work as a complementary thing. For an example, if you're aware of Reiki, pranic healing, quantum healing, so this works on the same concept. So, like, let's suppose I am working as an energy healer for somebody, right? So maybe I'm not participating directly, like at a mental level, to help them manifest something. But the thing is that I am clearing their blockages. I am working on their energetic system, helping them, channelize their energies and so on and so forth. Right. So basically, it's the same thing, and it goes with a lot of intention, with a lot of energy, with a lot of love and blessings for the person. So what you're describing is a similar thing. So maybe you're not following the energy healing process per se. So maybe you're not doing that, but what you're saying is a very important part of any kind of healing that another person is going through. ओके. सो मैंने दो चीज जो मैनिफेस्ट करी थी, एक तो यही था कि एक मेरे अंकल थे, उनकी हेल्थ थोड़ी खराब हो गई थी, तो उनकी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट किया था मैंने. और मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी ब्रेकअप हो गया था. तो उसके लिए मैंने मैनिफेस्ट किया था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वापस आ जाए, एंड इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. मतलब एकदम से सरप्राइजिंगली हुआ वो तो. शी वाज विद समवन एल्स और वो एकदम से वापस भी आ गई. ऑल ऑफ अ सडन मैं विजुअलाइज कर रहा था, क्या कहते हैं, कि वो उसके पास आके कहेगी कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई वाज रॉन्ग, और एग्जैक्टली सेम वर्ड्स उसने वही चीज बोली. Hmm. Hmm. ओके. Right. वन दिस लास्ट क्वेश्चन. Hmm. जैसे कि जो मेरे संग हुआ है, उसके बाद इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू शो माई इमोशन. मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू शो माई इमोशंस टू अदर्स. कि पता नहीं, मैं कहीं ना कहीं वो चीज ब्लॉक्ड हो गई है मेरे अंदर. आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से अनस्ट्रक योर सेल्फ में से हो जाएगा क्लियर, राइट? Unstuck yourself, may at least we will get an idea of unstuck yourself is just the first level of the healing process, but there you'll get this clarity ki acha, I mean, what kind of patterns you have been carrying, और ये जो चीज हो रही है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या mechanism है. Because
The thing is that maybe you bless the girl. So let's take a random name. Let's say the girl's name is Aditi. So ये वाली Aditi तो को bless कर दिया, heal कर लिया, let go कर दिया, right? But the thing is, if the origin point of what is hidden in your subconscious mind, if it is still there, तो ये Aditi चली जाएगी, कोई दूसरी Aditi आ जाएगी, Yes, फिर yes, दूसरी yes, चली yes. जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी. So The because question it's was not about Aditi, because it is about you. me. Right? What is it that is there inside you? And I would recommend you that you listen to this conversation once more. So when we talk about healing ourselves, that is what we say, that we bring awareness to and we bring awareness into the unconscious so that it can become conscious. So, you need to dig a little deeper now and go deeper into why it is the way it is. How did you even come to this point where you ended up attracting a person like this and getting attracted to a person like this? To be Why honest, it I is this think way? I made her like this. Possible. Again, Because it comes back because you can again make other people like this. yes, yes, yes. Because I know her standards. Her मतलब she was like क्या कहते हैं, मतलब मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए. मतलब वो बहुत पर्टिकुलर थी अपनी चीजों में, और मैं नहीं, मेरे को ये चीज गलत लगती है तो गलत लगती है. एंड शी स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. और कहीं न कहीं मेरे को ये चीज़ एहसास है कि ये चीज़ मैंने अपने और पिछले चीज़ों से जुड़ के, मूवीज़ वगैरह से, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, उन चीज़ों से देख-देख के कहीं न कहीं वो चीज़ मैंने इस इधर मैनिफेस्ट कर ली. Hmm. Yeah. So we need to dig deeper into this thing, go to the core of root causes of these issues, and वो root causes को resolve करना है, उसको completely integrate और dissolve करना है, ताकि ये जो whatever it is there inside, it does not continue to create the shadows outside. Because it's not like कि consciously हम सोचते हैं कि हमें ऐसा हो जाए हमारे साथ. But the thing is कि subconsciously it's the same thing that we are putting out. So we need to bring this thing, into awareness ki what that subconscious is actually made up of, and then going even deeper, how and whom created it like this. Because when you were born as a 2-year-old child, you weren't like this. You were born free and nice and whatever. Then what happened? What made you bring this pattern in your life? And then resolving that pattern. जब वो pattern resolve हो जाता है, then things stop repeating in the external environment. So that is the process. Are we going to get the recording session of it? Yes. Okay. Thank you. That's it, I think. Just need to keep faith on all of this. कभी-कभार faith इतना बुरा गिरता है ना, especially on full moons. पता नहीं क्या हो जाता है. Yeah. Tomorrow we'll be doing a full moon meditation also. You can join us for that. Yeah, I know. Karma will be guiding you. हर full moon meditation attend करता हूँ मैं आपकी. Amazing. Cool. Thank you, Sam. Thank you, ma'am. Yeah. Let's move to Rupali. Your hand is up. Yeah, hi Anamika and Akarma, and hello everyone. So I had this question, like in a couple of areas of my life, I'm not able to manifest or attract what I want, and also at one point I am thinking that I'm not even able to release, like whatever I had manifested so far. I want to release a couple of things and then attract the new ones. So it is in two aspects. Like one is about my job, my career, and second is about the relationship. So I'm not able to do that, and it's been quite a while that I want to achieve it, and definitely I want it to happen, but it's not happening. So, and also I have been working on myself, so I'm not sure what is going wrong, and I'm just seeing a no or a delay all the time, and it's making me feel quite, I wouldn't say like depressed, but it is very disappointing that it's not working out. So maybe my thought process is wrong, or I'm not sure what is it that is missing, that I'm not finding what I want. You attended that money energy wala session, na?
I did, but I think I need to watch the recording because I joined late, and that's what the problem was. So I'm watching the recording, but I don't think I finished it yet. Okay. Okay. So what you're struggling with is that the manifestations are not happening, within time, and then contrast show up, and then you feel disappointed. Yes, like to a point that especially during full moons or new moons, I just cry, I just give up. All those things are happening. I feel like, oh, all negativity comes in, like, oh, it may not happen, it will not happen. I just feel like hopeless then. This is also a wound, right? The wound of catastrophizing. Ki, matlab, see, the thing is that maybe there are 5 things going right also in your life, but you don't look at those things, and then one thing that you expected ki is timeline mein mujhe ye kar lena hai, and that did not happen, and then you feel extremely disappointed ki nahi abhi ye nahi hua nahi, aur wo hua nahi wahan tak ठीक था. ये जो कैटास्ट्रोफाइज हम कर देते हैं ना कि अब ये होगा ही नहीं, कि अब ये होने वाला ही नहीं है, और अगर ये ऐसा ही रह गया तो क्या होगा, and then we start extrapolating those things, that then we lose all the patience that we had, all the faith that we had, so on and so forth. So again it comes back to this thing कि ये वाला जो pattern है of getting into this point कि आप जो catastrophize करते हो चीजों को, ये किससे linked है, कैसे बना? When was the time when you felt like this? And then again connecting with that inner child, and then again having that conversation, the same thing that we talk about. See, the adult version of you knows how to have patience. Is the child version again जो कि इतना impatient or disappointed हो जाता है. It's the same thing we talk about, right? Trigger होना. This is also another trigger. So this is another trigger point for you to work upon. So another shadow aspect, another inner child or split that you need to integrate. जो split जो catastrophize कर देता है चीजों को. Okay. Okay, maybe I just need to revisit all the points and look into this because it's not pretty clear to me, like which wound or what exactly I need to do. But I will just ask a question right now, which is related to the same thing. It's like specifically if you can, just summarize or tell me that when you want to achieve certain thing and you have been trying and many a times you have failed at it and you have been rejected, be it love or be it a job thing or anything, um, like somewhere it happens that you start feeling okay, then maybe it's true that I'm not, it comes on to you, or basically I am taking it on myself, stating that it's not something that is I am not worth it, or maybe it's not meant for me. So all those type of thoughts are coming in because I have already tried so many times. So what how do I deal with this? First of all, you tell me that have you still done the healing mind blocks session? Not fully. हाँ, तो वो करना पड़ेगा, ठीक है? वो एक बार, because until and unless you experience that properly, ये नहीं होगा. If you want to repeat the session, you can always repeat it live, but I know your timings are a little off for India timings, so recording से, but you will have to do that session because otherwise this whole ये पूरा point ही मतलब कैसे बताऊं, invalid हो जाता है, right? So at least for one thing you experience it, for 1 or 2 points that you're trying to heal, you experience that. Once you experience that, then उसके बाद ये जो maybe all of these questions that you're asking or you ask, वो शायद drop हो जाए, और अगर नहीं भी drop होते हैं, then we have something to guide you on कि अच्छा
एक काम करो, इस प्रोसेस को ऐसा करके देखो, या इसको ऐसे टिल्ट कर लो, या वैसे टिल्ट कर लो. But the thing is that even if I give you the answer, it again goes back to, and it again goes back to doing the same process. तो एक बार वो process कर लेते हैं. And you do the reparenting session, not a problem. Do one thing, take out a day whenever you have a holiday. Do the contemplation for unstuck, work on, jotting down the fear. And whichever specific area, जैसे अभी आपने 2 specific areas की बात की, keep these 2 in focus. सब पे don't spread it out, ठीक है? ये 2 फोकस पे रख के पहले अनस्टक के क्वेश्चंस किए, whatever were relevant ones, फिर उसके बाद GSP के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है? उसके बाद आंसर मिल गया, स्प्लिट्स बाहर आ जाएंगे, पता चल जाएगा अच्छा कहाँ पे क्या था. उसके बाद थर्ड, do the this healing mind blocks. Okay. ठीक है, तो एक बार specific to this issue, if you want to try it on these particular issues, ये इस पे करके देख लो. But the thing is कि करना तो पड़ेगा. True. Otherwise ये घूम घूम के this will continue to show the ripple effect on the different things. What we tell people कि healing mind blocks में सारी चीजें address नहीं कर सकते कि दुनिया के सारे wounds address हो गए और अभी life जिंगा लाला हो जाएगी. No. But once you have the taste of integrating yourself, उसके बाद आप वो process इतना intuitive होता जाता है ना, and इतना fast होता जाता है that literally a trigger and split comes up in front of you and you're like 10 minute बैठे, and then you go to the root of it, like literally you go really deep down and then you identify the child, reparent it, हो गया. It gets really fast over a period of time. But उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि how does that process even taste like, feel like. True, correct. Even yesterday when Akarma had asked in the group, tell the experience of the last healing session. So I couldn't say much because I think I couldn't experience it fully. कोई नहीं, then you do it अच्छे से. We are there, group is there, you can anytime ask your questions. Okay, perfect. Thank you so much. Yeah, thank you Rupali. Sam, you have more questions? Okay, Malini had a question. Malini, your hand was up. Do you still have a question? You want to talk? Sorry, it was by mistake. Sorry. No problem, Sam. I wanted to add it to whatever the participant was talking about, but Akarma did it very well. I was also about to say the same thing, that if something is triggering us, the reason of that lies within us. So rather than blaming someone else, we got to introspect. That was all I wanted to say. Yeah. Thank you so much, Malini. Cool. Okay, guys. Yeah, Sonam, your hand is up. Anything you want to say? Yeah. Hi, Akarma. Hi, Anamika. Anamika, like I had one question. See, the thing is, like I am not completely healed. I am also working on myself. So maybe I am in negative, correct? So, so is it like until I go to zero, I should not be doing any affirmations or law of attraction or any such kind of thing? No. See, you need to be observant enough, aware enough of the space where it is coming from. Okay. So, for an example, see, ये सारी चीजों का कोई ऐसा तो है नहीं कि if you do an affirmation then things will go haywire or anything like that, right? So you do all of those things, but अगर उसमें बहुत ज़्यादा resistance नजर आ रहा है and you feel that there's tons of resistance in it and it doesn't feel like it's something that you can completely embody, then that is a sign कि नहीं, अभी there are there's more healing work that I need to focus on. And then उसके बाद affirmations तो हैं, and you can design your affirmations in a way. So see, when you're on a healing journey, that is why we say
affirmations need to be really customized. Something that feels true and in alignment to your heart. अब कैसे होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल कि हम नेगेटिव में हैं और हमारा एफर्मेशन है कि बहुत ही हायर स्टेट का एफर्मेशन हो गया है, ठीक है, तो क्या होता है, एक बैटल स्टार्ट हो जाता है हमारे अंदर. सो रादर देन like jumping too high, what we can do is we can create affirmations which feel more closer to us. ठीक है, तो it's like climbing up on the ladder कि एक step, 2 step, 3 step, right? So that this process also becomes more practical for you, more it starts showing results. तो because gaps होते हैं, for an example, let's suppose I earn 50K a month और मैं affirm करने लग जाऊं from next month I'm going to earn 10 lakhs a month. And my subconscious knows कि अरे वो आके बोलेगा कि अरे ये तो possible ही नहीं है. So better affirmation for me is from the next month my income has doubled. I'm making more money than what I'm making right now. So it's something which is more closer to you, something you can believe on, something you can affirm, right? एकदम दिल से ऐसे निकल के आता. तो ऐसे one ladder at a time. ये सिर्फ मैं तब की बात कर रही हूँ जब when you are in that space where you are in the negative spiral. तो उससे हम बाहर निकलने के लिए affirmations को इस तरीके से यूज कर सकते हैं while doing the healing work. फिर once you have reached the zeroth point, तो वो resistance खत्म हो गया which is going to pull you back. उसके बाद तो it's an open space for you. Go wherever you want. Okay, Anamika, one more question. Like in my past, I have done I tried doing some manifestation and I worked on it really hard. Like I spent lot of time working on it, but it didn't work out. Like for example, I was thinking that I should get this relationship and this person back, and it didn't work out. So is it like I am doing something wrong, or is it like it is for my higher good? Like So इसको आई थिंक अनामिका ने समझाया है ये, तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस इन अ डिफरेंट वे देन. It seems like the same question you asked just now. So let's say कि आपके हाथ में भी दर्द है, आपके पैर में भी दर्द है, आपके सिर में भी दर्द है, आपके 2-4 बॉडी पार्ट्स में दर्द है. तो आपने अगर अपना हाथ ठीक कर लिया है और अभी भी पैर में दर्द है या सिर में दर्द है, तो हाथ यूज करना तो शुरू कर सकते हो ना, राइट? हेलो, हाँ. तो हाथ यूज, तो इट्स नॉट अबाउट कि यू हैव टू वेट फॉर द हीलिंग प्रोसेस टू कंप्लीट. हीलिंग प्रोसेस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं किसी का. सो वी गो टू अ पॉइंट लाइक हील्ड एनफ. okay. है ना? तो कहाँ तक हम पहुंचते हैं जहाँ पे हमें अब लगता है कि हाँ अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है. सो हीलिंग मीन्स क्लोजर्स. सो द वुंड्स, इमोशनल वुंड्स दैट यू रिसीव्ड, you got closures of them. So वो एक एक करके क्लोजर आ रहे हैं. तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे जहाँ पे, तो जो चीज का क्लोजर आ गया वो यूज हो सकता है. अब इसका, जैसे मैंने ये बॉडी पार्ट की बात की, अब ये हम लेते हैं एनर्जेटिक बॉडी के एंगल से कि ये एफर्मेशंस वर्क क्यों नहीं होती हैं. क्योंकि लेट्स से अब लाइक यू हैव हैंड, लेग, दिस दैट बॉडी पार्ट्स, सेम वे इन योर एनर्जी बॉडी यू हैव 7 चक्र, 7 मेजर चक्र जो हम बात करते हैं. ऐसे तो बहुत सारे, तो 7 मेजर चक्रस की हम बात करते हैं. तो अगर वो चक्र की ब्लॉकेज अभी तक हील ही नहीं हुई है, वो हाथ अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है, तो उसको यूज करके कैसे रिजल्ट ला पाओगे? तो अगर मणिपुर में ब्लॉकेज है, स्वादिष्ठान में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट को अभी वो ब्लॉकेज को किया नहीं है, लेकिन हम बैठ गए हैं ओपोनो करने के लिए. हार्ट में ब्लॉकेज होगी तो ओपोनो कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा. मे बी आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी हो सकती है, you want to intend for it to work, बट इंटेंशन से नहीं होता ना.
हार्ट की ब्लॉकेज है, हार्ट चक्र इज वुंडेड, and Ho'oponopono, for it to work, the heart needs to be healed. If the heart is not healed, तो आप कर लो कितना भी बैठ के, तो आप अगर उस वाइब्रेशनल स्टेट में हो ही नहीं, if your मूलाधार is all shaky, तो आप बैठ के एफर्मेशंस कर रहे हो किसी ऐसी चीज के लिए that requires your मूलाधार to be strong and stable, नहीं होगा. Okay, Akarma. So these things need to be first addressed. This is the reason why we keep saying this कि healed enough, कि मान लो कि आपका मूलाधार हो गया है heal, or you feel stable enough in your मूलाधार now, but you still haven't healed from your heart fully, तो मूलाधार से related affirmations तो कर ही सकते हो ना, but heart से related affirmations work नहीं करेंगी. मणिपुर से रिलेटेड, अगर मणिपुर अभी भी हील नहीं हुआ है तो मणिपुर से रिलेटेड एफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगी. Okay. Akarma, I have a question. Like for example, अगर मैं ये चक्रा मेडिटेशन एंड ऑल कर रही हूँ रोज, तो इससे ब्लॉकेज हील मतलब हो सकता है? नहीं, वही जो आंसर मैंने अभी सैम को दिया था पहले, Okay. कि अगेन क्वेश्चन इज नॉट अबाउट सीधा हम जाके मेडिटेशंस आर नॉट हीलिंग प्रोसेस. मेडिटेशंस विल कीप यू अपलिफ्टेड. सो जो माइंड ब्लॉक्स हैं, जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं, उनको तो हील करना ही पड़ेगा ना. बिना उनके ये चीजें, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये आगे की बात है. आपको अगर अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है तो आप रोज तुलसी घनवटी खा रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन अभी बीमार हो तो तुलसी घनवटी कुछ नहीं करने वाली है. तो यू हैव टू फर्स्ट हील, देन these things will work. So ये चक्र meditations, these meditations will not work unless the blockages are cleared. You cannot clear the blockages yourself. You need an energy healer to clear them. ये DIY है ही नहीं. Especially energy blocks healing. Energy blocks healing तो DIY है ही नहीं. Full stop. मतलब इसके आगे तो I'm just telling you my kind of expert comment on this thing, कि energy blocks are not DIY things. They need to be addressed via energy healer only. तो ये तो हो ही Okay, नहीं सकता. Akarma. हाँ, Yeah, वो yeah. करने के बाद, वो किसी ने आपके सिस्टम की सफाई कर दी, वो एनर्जी ब्लॉक्स हील कर दिया, वो करने के बाद आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हो खुद. वो आपको सिखा देंगे इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, वो कर सकते हो. But removal of energy blocks is not possible. Even if you are an energy healer yourself, even if you know energy healing, even if you are an energy healer yourself, you still cannot remove your own energy blocks. आप दूसरों का कर सकते हो. आप एक ब्रेन सर्जन हो, दुनिया के बेस्ट ब्रेन सर्जन हो सकते हो, दूसरों की ब्रेन सर्जरी कर सकते हो, खुद की नहीं कर सकते हो. आपको दूसरा ब्रेन सर्जन ही लगेगा. एंड एनर्जी ब्लॉक्स रिमूवल इज दैट. Okay, तो है ही. Akarma. Yeah, got it. Thank you. तो वो कर लो एक एक करके. यू कैन address those ones. So whatever chakras you feel are blocked, whatever energy blocks are there, you identify, you heal them, and as they heal enough, then any affirmations related to those chakras. So you have to have good understanding कि हर चक्रा की एक certain quality रहती है. So मूलाधार is about security, safety, all that. So ऐसे ऐसे करके सातों की एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है. You need to do some reading about it and all that. So affirmations need to be aligned accordingly to the chakra. ऐसा मिक्स करके नहीं कि सब कुछ सब में डाल दी. तो एक दिन बैठ के
मूलाधार की एफर्मेशंस, एक दिन बैठ के विशुद्ध चक्र की एफर्मेशंस, एक दिन इसकी एक दिन उसकी, ऐसे ऐसे करके की जाती है। तो ऐसा नहीं है बस लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, कुछ भी एफर्मेशंस लिख ली, मिक्स बैग बना लिया और कर लिया, और वो वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मिक्स बैग में एक चक्रा 20% ओपन है, एक चक्रा 80% ओपन है, एक चक्रा 5% ओपन है। आपने मिक्स बैग बना ली, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो इसलिए दिस इज अ थिंग व्हिच आई कीप सेइंग कि सम थिंग्स यू नीड टू टेक द राइट गाइडेंस फ्रॉम समवन, सो दे कैन पुट यू ऑन द राइट ट्रैक एंड टेल यू कि ये ऐसे करो, इस तरह से करो। ये ऐसी चीजें नहीं है कि यहाँ से बुक पढ़ ली, यहाँ से ये कर लिया, ये वीडियो देख लिया, इससे कर लिया, ऐसे नहीं होता है ये सब। And one more thing I wanted to add for Sonam. Sonam, this thing that you were trying to do, that manifesting a very specific person and manifesting all of these things, so isme na inherently there are many spiritual laws which get broken in doing manifestation like this. So अगर आप ये कोशिश कर रहे थे या फिर अभी भी आपके माइंड में है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, आई डोंट नो, that's total crap online which people say manifest a specific person, this person and that person. It's bullshit. तो ये मत करो, because that is like kind of tearing the fabric of the universe. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वर्क नहीं करता है, वर्क कर सकता है, but it will not give you what you actually want. What you actually are looking for is not that person, that specific person. So this is just not, I mean, there's too much to say on this, so I'll just say ki don't try it. Or for anybody else who's here, don't try to mend the laws this way, because it will maybe that you end up manifesting that person. It will bring you more trap along with that than what you want to manifest. Yeah, Anamika, one thing, like instead of having a particular person in mind, can we just say that it should be a right person, right partner, and then Yes. manifest? Yeah. Yes. Do that. That is a right way to go about it. That you ask the divine selection is the word that we use. So you ask that to come forth for you. Okay. Right? That doesn't have to be. प्रोवाइडेड कि इस मैनिफेस्टेशन को, इस इन एफर्मेशंस को सही से काम करने के लिए योर स्वादिष्ठान एंड योर हार्ट इज हील्ड एनफ। Okay. अगर स्वादिष्ठान में ब्लॉकेजेस हैं और हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, तो इट डजंट मैटर तुम क्या लिख रही हो, राइट पर्सन या पर्सन का, कुछ मैटर नहीं करता है। इट विल बी जस्ट अ स्टेटमेंट, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि जो एनर्जी सेंटर्स चाहिए इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो एनर्जी सेंटर्स ही करप्ट हैं। तो वो सिर्फ बोलने की बातें हो जाएंगी, फिर वो बस बैठ के हम बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग। इट विल ओनली ब्रिंग यू डिसअपॉइंटमेंट कि इतने दिन से कर रही हूँ, इतनी एफर्ट लगा रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। इट विल बी जस्ट एफर्ट्स। तो पहले वो एनर्जी सेंटर्स को क्लियर करो और समझो कि हर एफर्मेशंस को क्लियर करने के लिए कौन से एनर्जी सेंटर्स लगते हैं। पहले उन एनर्जी सेंटर्स की स्टडी करो, उनको समझो कि स्वादिष्ठान का मतलब क्या होता है, मूलाधार का मतलब क्या है, मणिपुर का क्या है, विशुद्ध का क्या है, कहाँ से कौन सी एफर्मेशंस, कहाँ से कौन सा एनर्जी सेंटर यूज करना है उसके लिए। Okay. पहले इस चीज पे फोकस करो, पहले क्लीन करो, फिर एफर्मेशंस वर्क करेंगी। Okay. So, And for example, you will see, I'll tell you this also, I'll tell you one advanced level thing, कि वो एनर्जी सेंटर्स क्लीन होने के बाद ना आपको एफर्मेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। That also I can tell you। ये अभी अटके इसीलिए हुए हो क्योंकि वो घोड़ा चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो घोड़ा बैठा है जिद करके, उसको नहीं उठना, नहीं चलना है, और तुम मारे जा रहे हो कोड़े, और वो नहीं उठ रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहे हो। लेकिन वो घोड़ा उठ गया, वो चलने लगा ना, तो उसको डायरेक्शन देने की, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप ही दौड़ेगा।
the whole thing will just align because it's already aligned. It's already bringing you what needs to be brought. You will already be in alignment. आपको ये affirmations, law of manifestation तो आपको बहुत तुच्छी सी चीज लगने लगेगी. तो जहां अटके हो पहले उसको रिजॉल्व करो, एनर्जी सेंटर्स को हील करो, फिर ये चीजें काम करती हैं. ओके, अगर मैं ये एनर्जी सेंटर्स कैसे क्लियर होंगे? वो जो इसके पहले जो वर्कशॉप किया था वो मुझे रिपीट करना होगा. कहाँ तक किया है तुमने? माइंड ब्लॉक तक किया है, बट माइंड ब्लॉक वाला आई कुड नॉट एक्सपीरियंस मच, सो आई थिंक आई विल रिपीट इट. यू रिपीट दैट. हाँ, माइंड ब्लॉक्स के बाद एनर्जी ब्लॉक्स करने की जरूरत है. ओके, So, energy blocks, either you take help from an energy healer. In best, you can speak with Anamika. She's also an energy healer. yeah. You can approach someone. Otherwise, we are doing energy healing retreat in Mussoorie on 1st of December. Yeah, I know. तो हाँ, तो हमारी तरफ से तो ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल. लेकिन आगे अगर बढ़ना है, माइंड ब्लॉक्स के आगे बढ़ना है, तो पहले एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करना होगा. और एनर्जी ब्लॉक्स को खुद से नहीं रिमूव कर पाओगे, उसको हेल्प ही लगेगी. सो यू कैन आइडेंटिफाई समवन यू नो, अप्रोच देम एंड गेट दिस थिंग, और यू कैन अप्रोच अनामिका, और यू कैन कम टू द रिट्रीट. ओके, श्योर अका. ठीक है, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. थैंक यू अनामिका. Thank you. Namrita, your hand is up. Yes, hi everyone. Good evening. So Akarma and Anamika, I just want to narrate my situation where I am stuck. So actually, I was in a long-term relationship, and everything was set for marriage and so on. But somehow the boy backed out. He was not sure to get married, and he has some issues with the financial, like he was not having a good package. So you cannot stop me. जाना ही जाना है मुझे. okay, sorry. So the boy was not ready to go ahead with the marriage. So since our parents was not agreeing on this fact that after waiting for so long, he backed out. So we just went on our own paths. But since I was into this relationship for a longer time, currently I'm not speaking to him because we are not, he has moved to Germany and I'm still in India. But any person whom I am seeing, right, for marriage or anything, I'm just searching some of his qualities into the another person. And literally I started searching for profiles for marriage this year, but till last 2 years I was into great depression. I seeked help from counselors, from psychologists, from psychiatrists as well. And then I resort myself into deep work, like I engrossed myself into too much of work. And I was working 13 to 14 hours for my company so that I do not feel that depression into me and I can be engaged into something. But till this time, currently I'm not in that depression, but I always feel that I am trying to search him into some other guys, which I sometimes feel might be wrong on my part because each and every individual is different. So I'm not sure how I can just stop searching him on everyone. What work did you do with the psychologist or psychiatrist you met? They used to go for psychiatrists used to give me medicines for depression. Like I was not able to sleep, so they used to give me antidepressants. But the counselors and all, they asked me to go on a
proper diet, sleep well, do meditation. That's what the counselors used to do. They used to listen to me. Like, I used to have 1 hour of session with them. They used to listen to me, then give me some ideas that socialize, do this, do that, like that. Like, I used to go for like 2 to 3 sessions, like 3 weeks, 3 sessions, like that. The psychiatrist was not of much help because they used to give me those sleeping pills and antidepressants, which I was not feeling much good for health. So I just took it for sometimes when I was into deep depression, but then I stopped taking those medicines. Okay. Okay. All right. So based on what you are